So today we will do the procedure for testing of hypothesis, right? So what is the meaning of testing of hypothesis? It means we will have a statement about the population parameter and we want to check whether this statement is correct or not, right? So first step in this category is null hypothesis. तो जब भी हमने hypothesis testing लगाना है सबसे पहले we will set the null hypothesis H0. Now what is null hypothesis? So null hypothesis in general, hypothesis is the statement about anything. ठीक है जी, simple एक statement होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं. Today there will be rain or not, and how there will be maybe there will be a less probability of increment in the cases of corona cases. ठीक है, so this is any kind of statement, but here we are talking about the statistical hypothesis. So first in the category is the null hypothesis. First of all, you will set the null hypothesis, then you will check the alternative hypothesis. So before coming to null and alternative hypothesis, here is very important topic. They have written the test of significance. Actually, the procedure for testing of hypothesis is nothing but the procedure to test the test to it is the test of significance. सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है. सो आई एम जस्ट राइटिंग I'm just reading. A very important aspect of the sampling theory is the study of the test of significance. Sampling theory का सबसे important part है test of significance, which enables us to decide on the basis of the sample result. देखो, we don't have, हमने सैम्पलिंग क्यों करनी है, राइट? क्योंकि सारे पॉपुलेशन को एकदम से एस्टिमेट करना, पॉपुलेशन के एक एक यूनिट्स को निकाल के उससे रिजल्ट निकालना, इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई वी यूज द सैम्पलिंग थ्योरी. उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है. तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्या बताता है? It is for what? It is to check the deviation between the observed sample statistic and the hypothetical parameter value. अभी सेकंड नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ फर्स्ट पढ़ रही हूँ. The deviation between the observed sample statistic and the hypothetical parameter value, and the deviation between two independent sample statistic is significant might be attributed to the chance or the fluctuations of sampling. कि क्या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ऑब्जर्व सैंपल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है एस्टिमेटेड वैल्यू. क्या मतलब है इसका? एस्टिमेटेड वैल्यू. हाइपोथेटिकल वैल्यू जो आपके पास एक गिवन वैल्यू है, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. अगर सिग्निफिकेंट है, ये किसके करके सिग्निफिकेंट है? या तो फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग है या कुछ और इसका रीजन है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है. अब डेविएशन बिटवीन, अभी हमने कल बात की डेविएशन बिटवीन, दे हैव रिटन deviation between observed sample statistic and hypothetical parameter value is significant or not. Test of significance क्या बताता है? Test of significance tells about the deviation between the observed sample statistics, suppose that I have taken small t, and hypothetical parameter value, that is mu. इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. अभी कल आपने z लिखा, z क्या लिखा? t माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ t डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ t. बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप चेक कर रहे हैं, राइट? अब अगर t मेरा सैंपल कौन सा है? सैंपल स्टैटिस्टिक्स x बार है और मेरा एक्सपेक्टेड ऑफ t कितना होगा?
that is Ex bar is equal to mu. It means आप चेक कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन x bar and mu is significant or not, significant or not. So ये हमें कौन बताता है? The test of significance. या दो इंडिपेंडेंट सैंपल स्टेटिस्टिक्स ले लीजिए, एक मैंने x1 बार ले लिया और एक मैंने x2 बार ले लिया. इफ आई वांट टू चेक इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट और नॉट, उसके लिए ये सारी चीजों को चेक करने के लिए कि द डिफरेंस बिटवीन और द डेविएशन बिटवीन द सैंपल एंड द हाइपोथेटिकल पैरामीटर वैल्यू is significant or not, it is checked by the test of significance. So this is the difference between the sample statistics and the hypothetical parameter value, and this is the difference between the two independent, two ये मैंने क्या लिए, two independent sample statistics. ठीक है जी. तो हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से इन दोनों चीजों के बारे में पता लगाते हैं कि इन दोनों, अगर मैं कहूँ ये, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों हम इक्वल ले रहे हैं, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वल टू, आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है. तो दैट जहां पे ये टेस्ट लगता है उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट. सो उसके बाद for large and almost all distributions, binomial, Poisson, negative, hypergeometric, chi-square can be approximated very closely by a normal probability curve. We use the normal test of significance for large samples. आप underline करेंगे. We use the normal test of significance for large samples. Large samples basically we take when the value of n is greater than or equal to 30. ठीक है जी. And some other well-known tests for the test of significance for studying such differences for small samples, they are t-test, f-test, and Fisher's transformation. So the first question was why to apply the test of significance. It is to check the deviation between the sample statistic and the hypothetical value is significant or not. ठीक है जी. This was the test of significance. For in order to continue for the test of significance, the first step is to set the null hypothesis. So I am reading from the third line. We first set up a, for applying the test of significance, we first set up a hypothesis. आप hypothesis के ऊपर लिखो statistical hypothesis, not a general hypothesis. In this case, we are setting a, when we are talking about the normal test, we are setting a statistical hypothesis. So what is a statistical hypothesis? A definite statement about the population parameter. कोई भी statement जो population parameter के बारे में, such a hypothesis which is usually a hypothesis of no difference is called null hypothesis. And is usually denoted by H naught, right? According to Professor R. Fisher, null hypothesis is the hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true. अब देखिए इसका क्या मतलब है. So the first step in test of significance is to set up the null hypothesis. It is denoted by H naught. It is the hypothesis of, क्या लिखा है आप, no difference, of no difference. For example, or it is the statement about the population parameter. अब मैं मान लूं, for example, if I will set mu is equal to 30. So this is the
दिस इज द, अगर आपको चेक की करना है कि सपोज आपके पास कोई डाटा दिया है, यू वांट टू चेक दैट द मीन ऑफ द population is 30. It means what h naught you will what h naught you will select mu is equal to 30 as it is. जो कहा वो as it is उठा लिया. सपोज करो आपको चेक क्या करना है, mean of population is greater than 30. It means still you will check, you will set null hypothesis mu is equal to 30. So this is the hypothesis of no difference. कोई difference इसमें exist नहीं करता. It is a hypothesis of no difference. ठीक है. और यहाँ अब उसके बाद बारी आ जाती है ऑल्टरनेटिव की. अगर हमें कुछ नहीं दिया, सिंपल कहा है मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज 30, तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया. ठीक है जी. अदरवाइज ऑल्टरनेटिव, अगर कुछ नहीं दिया देन यू विल सिलेक्ट हियर इट इज नॉट इक्वल टू. ठीक है जी. अगर आपको दिया है, आपको चेक करना है मीन ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 30, इट मींस आपका h1 क्या आएगा, म्यू इज ग्रेटर देन 30. म्यू इज ग्रेटर देन 30, राइट. और अगर और कंडीशन क्या है, h1 इज म्यू लेस देन 30. और इस सारे को कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. फिशर क्या कहते हैं, फिशर कहते हैं इट इज द फिशर कहते हैं null hypothesis is a hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true. कि इस hypothesis को हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है ये रिजेक्ट हो जाए, लेकिन लेके क्या चल रहे हैं, इट इज ट्रू. देखो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. हमने सेट किया, हमने सेट कर लिया म्यू 30 है, ये हमारी एजम्पशन है, ये मेरी एजम्पशन है. ठीक है जी. ये क्या है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. लेकिन आप इसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन. हो सकता है ये रिजेक्ट हो जाए. So that's why they are saying null hypothesis is the hypothesis in which is tested for the possible rejection under the assumption that it is true, right? So आगे चलेंगे. For example, in case of single statistic, h naught will be that of a sample statistic doesn't differ significantly from the hypothetical parameter value, and in case of two statistics, h naught will be that the sample statistics do not differ significantly. So what does it mean? They are saying कि हमने इसको क्यों चेक करना है, हम क्या ले सकते हैं अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है. इन केस ऑफ सिंगल स्टैटिस्टिक यू कैन सेट फॉर एग्जांपल म्यू इज इक्वल टू 30, मैंने सेट कर दिया. और यू विल राइट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ये ट्रू लेके चल रहे हैं. आप क्या लेके चल रहे हैं, ये ट्रू है. ठीक है. और जब आंसर ट्रू आता है, इट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the statistic and sample statistic and hypothetical parameter value. या आप ये लिखेंगे या दोनों ही आप लिख सकते हैं. ठीक है. और अगर हमारे पास इन केस ऑफ टू इंडिपेंडेंट statistic, suppose x1 bar and x2 bar, then what is h naught? H naught will be x1 bar is equal to x2 bar, or x1 bar minus x2 bar is equal to 0, or you will write there is no significant difference between two independent sample statistics. So this is the theory behind how to use how to apply null hypothesis, right? Now I'm coming to the next.
Now, having set up the null hypothesis, we compute the probability P that the deviation between the observed sample statistics and the hypothetical parametric value might have occurred due to the fluctuations of sampling. ठीक है जी, हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे किस चीज की, दोनों की डेविएशंस की, यानी टी की और एक्सपेक्टेड ऑफ टी की. If the deviations comes out to be significant, null hypothesis is rejected. हम null hypothesis क्या लेके चले हैं? There is no difference between them. हमने टेस्ट लगा लिया, टेस्ट लगाने के बाद अगर हमारा क्या आ रहा है कि उनका जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है, इट इम्प्लाइज नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ significance, otherwise the deviations are not significant. So ये वाला ये जो रिजल्ट है ये हम सबसे एंड में अप्लाई करेंगे. now any hypothesis, now the second one is to set up the alternative hypothesis. Any hypothesis which is complementary to the null hypothesis is called an alternative hypothesis. It is usually denoted by H1. For example, if you want to test the null hypothesis that the population has a specified mean mu naught, तो null क्या है? null मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे mu naught की वैल्यू सपोज करो 30 है, तो mu is equal to 30 हो गया, right? Then the alternative क्या होगा? mu is not equal to mu naught. इसमें दोनों केसेस आ जाएंगे, greater than or less than. Either it is greater or less than. या mu अकेला mu naught से बड़ा है या mu is less than mu naught. The alternative hypothesis in one is known as two-tailed alternative, and the alternatives in 2 and 3 they are known as right-tailed and left-tailed alternatives respectively. Right? So the setting of the alternative hypothesis is very important since enable us to decide whether we have to use a single-tailed or two-tailed test. क्योंकि single-tailed के लिए बेटा जब हमने टेबल वैल्यूज देखनी है वो अलग आएंगी, two-tailed के लिए टेबल वैल्यूज जो है वो अलग आएंगी, right? So then उसके बाद the third step was to set the level of significance or critical region. So we will continue it tomorrow.